she has hit the rock bottom, and not just the earth but down inside. So this is like, how she feels and how her life moves: extreme up, extreme down, extreme up, extreme down, into the stars, into the seashells. her life is ups and downs, ups and downs. और इस बीच में उसे काफ़ी सारा डिसीजन मेकिंग करना होता है. Okay, she has to be able to bring balance in her life, to balance her in her emotions, and to be able to tap into her own power and learn all the lessons she has come here to learn. Not to get too hurt easily, balance her emotions, not always to think from her heart, and not to cling on to things, people, relationship very strong, very tightly. She is here to learn all these things. Okay, so she will keep attracting these kind of experiences in her life. अब यहाँ पे देखिए, नाउ यहाँ पे टू एक्सट्रीम्स हो गया है. यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे हैंग्ड मैन है. यानी कि एक तो बिल्कुल अंडरग्राउंड वाटर है, सी है, और एक स्टार है. यानी कि टू एक्सट्रीम लेवल्स. इस दोनों के बीच में शी हैज़ टू डू अ लॉट ऑफ डिसीजन मेकिंग, एंड दैट इज़ वाई शी विल लर्न फ्रॉम दिस. प्रैक्टिस करना है उसको काफ़ी. यहाँ पे देखिए कि एक चीज़ जो आ रहा है ना, कि शी हैज़ टू she feels, because she also thinks from her heart, and maybe she takes things very personally all the time. जो कि मैं बोल रही हूँ कि उसके पास्ट एक्सपीरियंस से आ सकता है या उसके पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस से भी आ सकता है. तो यहाँ पे भी देखो, ये उसका कार्ड है, अंकिता का कार्ड है, लेकिन यहाँ पे अंकिता एक कॉर्नर में बैठी है. तो व्हाट हैपेंस इज दैट शी फील्स इग्नोर्ड. ओके, दिस इज अंकिताज रीडिंग, दिस इज अंकिता सोल पर्पस. बट यहाँ पे अंकिता देखो, यहाँ पे कॉर्नर में बैठी है. यहाँ पे कौन है? यहाँ पे उसका गाय है. ओके, यानी कि आप बोल सकते हो कि उसके रिलेशनशिप में सम हाउ दी गाय टेक्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एंड व्हाट हैपेंस इज दैट शी फील्स left out, she feels ignored, pushed to the corner, and that is what she and again the same cycle starts, feeling hurt, and feeling hurt, and then maybe being insecure, then codependent, and then extreme behavior, thinking from her heart and all that. और उसके बाद उसको फिर hurt होता है, and then what happens, she goes inside, reflects on it, and then works on it, comes out as a little rebel, but and also tapped into her spirituality a bit. Okay, ये चीज़ है. तो यहाँ पे काफ़ी एक डिसीजन मेकिंग हो जाता है कि ये सही है कि गलत है कि नहीं. सुशांत के केस में भी शायद उसने काफ़ी डिसीजन मेकिंग किया होगा, बट दिस डिसीजन मेकिंग इज़ मोर लाइक अ टू ऑफ सॉर्ड. शी डजंट नो हाउ. कभी लगता है कि येस, दिस गाय इज इग्नोरिंग मी एंड ही इज आई एम बीइंग, और कभी वो सही लगेगा, कभी उसको वो गलत लगेगा. इट्स दिस काइंड ऑफ अ थिंग, बट इट्स मोर लाइक being riding on your emotions, and it is coming from her own things that she has to learn in her life, own securities and all those things. And how is these things powered? These things are powered by she being somebody who listens to her heart. ठीक है, तो बचपन से ही वो ऐसी ही होगी, वहाँ जहाँ पे वो अपने she is somebody who listens to her heart. She will do things that her heart calls for. She will not she is not very calculative or very strategic in that way. She listens to her heart and she does whatever her heart guides her to do. And yes, again, all the cycle plays off. लोग उसको कैसे देखते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड है. लोग हमेशा उसको उसके लाइट में नहीं देखते हैं, उसको हमेशा एक दूसरों के साथ एसोसिएट करके देखते हैं. यानी कि people don't see her as her own thing. People always see her as somebody, like okay, सुशांत के साथ है तो सुशांत की गर्लफ्रेंड है, अभी विकी जैन के साथ है तो उसकी गर्लफ्रेंड है. And she needs to rise above this thing. She has to rise above this thing, and she needs to shine in her own light. Again, a very loud, clear message for her to stand in her own power and stop depending on people, and maybe take responsibilities for whatever everything, because you can learn only when you are taking responsibilities in your life. You are taking the role, you are taking the responsibility of your part that you have played in everything, and then coming up and shining in your own light.
and that's why her life keeps on, fluctuating between extreme up and extreme low. And in between those two things, she has a lot of there is a lot of यहाँ पे देखिए एक there is a lot of insecurity, there is a lot of feeling left alone. यहाँ पे देखो left alone and all those things. So that is the guidance, guys. Do let me know what you feel about the guidance, and thank you so much for watching, and I will see you again. Take care. Bye for now.